अच्छा चलिए ये वाला पेपर हम कर रहे हैं और आई स्टार्ट एट द एंड, ठीक है। ये फेब्रुअरी मार्च 2019 है, ठीक है। ये बस देख लें कि एंड से स्टार्ट कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द वेरी एंड, ठीक है, फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन एंड we'll try and do this as quickly as possible, ठीक है। The first one, methane, ethane, propane, butane, they've given you the number of कौन सी आवाज आ रही है ना? Yes, sir. अच्छा, they've given you the number of carbon atoms, the melting point. Remember, हमने organic chemistry में पढ़ा था, the melting and boiling points. When you go in a homologous series, if you have a bigger molecule, तो उससे क्या होता है? Bigger molecules you have higher melting and boiling points. So bigger molecules always have higher melting points and boiling points. That's always true for bigger molecules. Describe how the boiling points of the alkanes vary with the number of carbon atoms. So, well, yes, some bigger molecules you got. Which alkane has the lowest melting point? So, yeah, say minus 182. So that's obviously methane. Deduce the physical state of butane at minus 50. ये जरा बताओ ना कि ब्यूटेन की minus 50 पे what is the state of butane at minus 50? Liquid, solid, gas क्या होगा? Solid. क्यों solid होगा? Remember, if the temperature is between the melting and boiling points, then it's going to be a liquid. So without minus 50, Okay. minus 50 is right in the middle. Yes. So between the melting and boiling points, the substance is always a liquid. अगर solid कब होता? If it had been below its freezing point, then it would have been a solid. Gas कब होता? If it's higher than its boiling point, ठीक है? Okay. तो इसी तरह दूसरों को भी बता दो कि let's say what is the state of this one at minus 190? क्या होगा? First one, methane. It's also liquid. No. Minus 190 कहाँ पे होगा? It's going to be a liquid if it's between the melting and boiling points. Like minus 190 कहाँ पे होगा? Minus 190 is lesser than the freezing point. Right? Is that clear? Yes. तो उसका मतलब it's going to be a solid at minus 190. Minus 50 में क्या होगा ये? Also liquid. क्यों minus 50 कहाँ पे आ रहा है? No. Solid. Minus 50 यहाँ पे आ रहा है? Minus 50 उसके boiling point से ज्यादा है या नहीं है? नहीं है. Minus 164 उसका boiling point है और ये minus 50 है. Yes. ये इससे बड़ी वैल्यू है, इससे छोटी वैल्यू है? इससे छोटी है. बड़ी है. नेगेटिव Okay. minus 3 बड़ा होता है या minus 1 बड़ा होता है? -3. minus 1 बड़ा होता है. मतलब हायर टेम्परेचर कौन सा है दोनों में से? Higher temperature -3. -1, sorry. हाँ तो वो बड़ा है ना, minus 1 बड़ा है, ठीक है। रिमेंबर नंबर लाइन उल्टी हो जाती है जब आप लेफ्ट पे जाते हो 0 से, Yes. ठीक है। तो रिमेंबर दिस कि नेगेटिव वैल्यूज द स्केल इज वो ऑपोजिट होता है। तो in this case -50 is over here, ठीक है। तो -50 पे it's going to be a gas। अच्छा ये क्या होगा -50 पे? सेकंड वाला ईथेन। at -50 Gas.
-50 इससे बड़ी वैल्यू है, बड़ी वैल्यू, हाँ। So it's going to be a gas. ये क्या होगा -50 में? This one. तो ये आवाज आई है? Yes. अच्छा, ये क्या होगा -50 पे? What is this? Propane. Liquid. -50 बीच में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, so anyway, describe the state of butane, तो आपने बताना है कि it's -50 is lower than the boiling point, while it's higher than the melting point. बीच में, hence liquid. अच्छा, quickly next one. Dot and cross diagram CH4. Carbon has 4 electrons. एक इधर share किया, एक इधर और एक इधर. ठीक है, remember carbon makes 4 bonds. It's got 4 electrons. Hydrogen has 1 electron, so it shares. So that's it. ठीक है, that's CH4. Complete the word equation. Methane and oxygen. Whenever you burn an organic compound, क्या produce होता है? दो चीजें produce होती हैं. One of them is carbon dioxide. Complete combustion. And the other one is water. Incomplete combustion, you might also get carbon monoxide or soot, जो कि carbon होता है. Methane and ethane are dash, which belong to the are dash are alkanes. Are क्या होगा? A chemical functional alcohols, carbohydrates, hydrocarbons. ठीक है? They are hydrocarbons which belong to the same homologous seas. Members of the alkane homologous seas have similar. क्या चीज similar होती है ना homologous seas? They have similar chemical properties. Remember, physical properties are not exactly the same. Due to presence of the same dash group, functional group, ठीक है, all homologous Cs, they share the same functional group. आगे क्या? Petroleum is separated into useful fractions by fractional distillation. अच्छा, ये petroleum की fraction है और ये उसका use है. Bitumen का भी use होता है, that's used to make roads. Kerosene planes, ठीक है, that's used to make fly aeroplanes. Naphtha जो है, that's for making chemicals, chemical industry. So your last question, उससे फिर second last. Number 6. I think it's a question about chromium and transition metals. Suggest why chromium is manufactured by electrolysis and not by the reduction of chromium 3 oxide with carbon. So क्यों use करते electrolysis? Because it can't be, carbon से reduce नहीं होता. Not by reduction. Carbon है, CrO3 है. If carbon was more reactive in the reactivities, carbon would have taken the oxygens, खुद वो बन जाता carbon dioxide, and chromium would have been produced. But that is not possible. Why? Because probably because it's higher in the reactivity seas. So can't be reduced by carbon. ठीक है, clear है? Yes. और ये हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में कहीं ना कहीं हमने पढ़ा था, वो देख भी लेते हैं, जल्दी से गो थ्रू कर लेते हैं कि एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स में second.
अच्छा, extraction of metals ये हमारा था. तो extraction of metals में we did extractions of different metals. उसका जो basic idea था when we जो overall में पढ़ा था वो ये था कि these are all your metals in the reactivity series. उसके बाद हमने पढ़ा था कि the ones that are at the bottom of the reactivity series, the unreactive metals, वो आपको वैसे ही मिल जाते हैं, ठीक है. Gold nuggets etc. You can find them in their native state. Even copper can be found in its original form, ठीक है. So you don't have to do any chemical reaction. Number one. But sometimes you also find ores. अगर तो आपको ना वैसी मिल गए in its native state, the copper is not going to be pure. मतलब pure metal तो नहीं होगा उसके अंदर. There would be other stuff, other mixtures. So what you do is you do electrolysis to purify that copper. Anode where you put copper, copper dissolves, loses electrons, turns into ions. Those ions get attracted to the negative cathode, where they gain those electrons back. And तो यहाँ पे you get pure copper. जो भी impurities हैं, they remain behind. The other thing is, what can also happen is that sometimes copper can form copper compounds as well, like copper carbonate. So what you do is you dissolve it in acid, you turn it into a solution. For example, copper carbonate will dissolve in acid and it will form sulfuric acid. और जब वो dissolve होगा तो उससे क्या होगा? उससे होगा कि you'll have an aqueous solutions, do electrolysis, copper ions being the unreactive ones, the lower one in the reactivity series, will end up gaining electrons and they'll turn back into copper. So you'll find a deposit of copper at the cathode. और H2 के साथ भी reduce कर सकते हो कि H2 is more reactive. Reactivity series में H is higher than copper. So you could use that process as well. कि उसको hydrogen के साथ reduce कर दो. Then you had iron. Iron was, how was iron produced? Iron was produced by reduction with carbon. इसका detailed process था. तो कार्बन जो है ना वो आयरन से ऑक्सीजन वगैरह छीन लेते हैं. लेकिन जो टॉप पे जो रिएक्टिव वंस होते हैं, they can't be reduced by carbon. Carbon will not be able to take away oxygens and displace them. So उनके लिए the only option left is electrolysis. So you do electrolysis for very reactive metals to obtain them from their compounds. तो suggest अब वो molten chromium 6 oxide का electrolysis कर रहा है. तो products बताओ. तो positive के ऊपर कौन सा negative ion attract होगा? Negative ion is oxygen का होता है, non-metal. Or chromium is a metal that's a positive ion that's going to get attracted to the negative cathode. तो chromium आपको इधर मिलेगा. Is this clear? Yes. अच्छा, how is chromium 3 oxide reduced? तो chromium 3 oxide में ना ये जो chromium है ना इसका charge +3 है. Oxygen -2 होता है. उसे लिखा है chromium 3 oxide. यहाँ पे the chromium charge is 0. So that means chromium went from +3 to 0. So chromium went from +3 to chromium having no charge at all. That means it gained electrons. Charge कम होता है इसका मतलब है you're gaining electrons. That means you're getting reduced. Is this clear? Yes. अब उसके बाद है कि how is this exothermic? क्योंकि the products are losing energy. So products have lower energy, which means that they lost energy. Hence that is exothermic, ठीक है? अच्छा, transition metal. Okay, transition metal. How is transition metal different from group 1? क्या properties है? There are 5 ways in which they are different. What are those 5 ways?
5 तरीके थे वो इधर लिखे हुए भी हैं ये मेटल्स के चैप्टर में व्हाट आर दोस 5 ways के ये एक्सट्रैक्शन था सारा 1 सेकेंड 5 प्रॉपर्टीज वैसे लिख देता हूँ वन इज दैट दे फॉर्म करेक्ट कंपाउंड्स solutions second is they have relatively high melting and boiling points and densities as well okay they're good catalysts fourth is they have variable oxidation states ठीक है is this clear Yes. see electroplating का give one observation that's been made during this what will happen कि ये chromium का बना हुआ है ठीक है this is made out of chromium तो chromium को आप हमेशा place करते हो positive anode पे the battery is going to take electrons away from it chromium will turn into chromium 3 plus ions it would lose electrons so chromium ends up dissolving और यहाँ पे battery is giving electrons back negative end है so the chromium ions will start to gain electrons so they'll start turning into chromium back again is that clear Yes. so observation give one observation anode dissolves अच्छा sorry chromium copper के बारे में ये actually पता नहीं कॉपर की बात कर रहा है उसने बताया नहीं exactly लेकिन observation one is that one observation is that anode dissolves the other observation at the other side is you have a metallic deposit on the spoon so why are metal objects electroplated so they don't rust एक artificial coating आ जाती है of an unreactive metal but that coating could easily break वो break होगी तो वो rust करना दोबारा शुरू कर देगा which of these represents nichrome is an alloy तो of nickel iron and chromium इसका मतलब तीन चीजें मिक्स हुई है वो haphazardly randomly mix होंगी so I guess it's going to be K ठीक है it's going to be a random arrangement of metal ions in the metallic lattice is that clear ये clear है बात Yes. Just a second. अच्छा अब अगला पार्ट ये वाला क्वेश्चन भी हो गया उससे पिछले पे describe the reaction of sodium hydroxide with a named acid कोई भी acid HCl ले लेते हैं sodium hydroxide NaOH plus HCl it will produce NaCl plus H2O describe क्या करेंगे पता नहीं क्या कह रहे हैं लेकिन वो देख लेते हैं this is known as a neutralization reaction it's also exothermic you wouldn't see anything because everything is soluble अच्छा अमोनियम सॉल्ट्स के साथ क्या होता है अमोनियम सॉल्ट्स लाइक NH4Cl
whenever they react with a base, what happens is KNH4 अपना H+1 lose कर जाता है और वो H+1 ना OH ion के पास चला जाता है. So it turns into water. What is left is your salt. So ammonia gas gets produced. Which is pungent smelling. And it changes the color of dab litmus paper from it changes the color from dab litmus paper from red to blue. इसका टेस्ट भी है अमोनिया का. फिर नेम इंडिकेटर एनी इंडिकेटर बस बता दो कि मिथाइल ऑरेंज के साथ बेस में मिथाइल ऑरेंज इज येलो. It's yellow in base while NaOH is a base. So that's it. ठीक है. अच्छा फिर अगला पार्ट ये कि अच्छा हम पेपर ही कर रहे हैं गलत करें क्योंकि C2 मैंने खोल लिया. we're supposed to open 4.2. ये थोड़ा इजी होगा एक्चुअली. हम एक से उसको स्विच कर ही दें 4.2 के ऊपर. C2 हमारे उसमें वो है ही नहीं, उसका एक्सटेंडेड कहीं नहीं है. तो गलत वर्जन कर रहे थे लेकिन the questions were relevant but slightly easier questions in that paper. अच्छा which one is a gas at room temperature out of all of these? Argon. क्लोरीन क्या होता है? Gas. तो क्लोरीन है, आर्गन है. सल्फर क्या होता है? Also gas. सल्फर सॉलिड होता है येलो रंग का. अच्छा फॉर्म्स ऑफ बेसिक ऑक्साइड विद द फॉर्मूला H2O. कौन से ग्रुप में होगा? O के ऊपर ग्रुप 6 में क्या चार्ज होता है? It's -2 राइट. बेसिक ऑक्साइड कौन से होते हैं? मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड? बेस हमेशा मेटल ऑक्साइड होता है. तो बेसिक ऑक्साइड एल्यूमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड होता है. सो इट्स गोइंग टू बी Na+1 O group 6 by -2, so the formula is going to be Na2O, which is exactly what they're looking for. Is that clear? Yes. किसके आउटर शेल इलेक्ट्रॉन्स फुल होते हैं? नोबल गैसेस, ठीक है, आर्गन के. Which oxide causes acid rain? Acid rain, non-metallic oxides होते हैं ना, they're usually acidic. लेकिन जो acid rain है ना, वो specifically sulfur के oxides होते हैं. They end up forming. So sulfur forms an oxide, sulfur होगा इसका आंसर. बॉक्साइड से क्या चीज एक्सट्रैक्ट करते हैं? व्हाट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम बॉक्साइड? Aluminium. वो Al है. मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर किसका मैक्रोमोलिकुलर स्ट्रक्चर है? Silicon. ठीक है, सिलिकॉन जो है, सिलिकॉन, सिलिका, ऑल आर डायमंड लाइक.
डायटोमिक कौन सा होता है? ग्रुप 7 जो होता है दैट्स डायटोमिक. Cl2 Br2 I2 एक्सेट्रा. ठीक है, क्लियर है? Yes. तो फिर ये कि define the term element. What is an element? Element is a term substance having the same type of atoms. और सारे atoms में proton number constant होना चाहिए. Having same proton number. हर element जो है it's identified by its proton number. Any carbon that's जब तक उसका proton number 6 है you're going to call it carbon. ठीक है, उसके isotopes वगैरह होंगे, but still you're going to call it carbon. So कौन ये वाला पेपर आप इसमें 2 क्वेश्चन अगर भेज दो, 3 ऑफ ये मैं ग्रुप के ऊपर लिंक भेजो. मेरे गले में इस वक्त फिर दर्द हो गया एक से. ठीक है, ये मुझे भेज देना. ठीक है, Okay, sir. चलो, ओके, अल्लाह हाफिज. Okay, sir. Allah Hafiz.